S. Chan presents educational video lectures as per the new UGC curriculum. Difficult concepts made easy. Study anywhere, anytime. Okay, in the last video, we studied about the valuation, we studied about imports and exports. Now, if we see to the quantity of imports, if it is more than a country expects, how can it have an adverse effect over the country's economy? It can distort the balance of trade situation in India or in any country, right? And which will lead to devaluation. And now devaluation not every time is the right thing. Being a measure of correction of an economy, it can be a right thing, but then automatically it happens again and again, it might not be a right thing. To get in-depth knowledge of various subjects in commerce, we recommend these books from S. Chan Publishing and Vikas Publication. Link is provided in the description box. Welcome to S. Chan Academy. My name is Saurav Gupta. We are going to study export-import policy in this video. In India, it refers to the government's guidelines and regulations governing exports and imports. See, whether it was required to have regulations for exports and imports, you can think it of. Something is being imported into India and it is being dumped into India, let's say. Is it a nice thing to happen? Let's say China, for example, nowadays dumps a lot of stuff in throughout the world, basically, in all other countries. But in India, it is the most favorable practice for them to dump it here, because Indians do have the fascination of buying something which is cheaper and then again something new, innovative. So we like that, and for that reason they keep dumping new toys, new things over here, and we see it on a daily basis over red lights, vendors selling it in unorganized sector, right? So we see a lot of stuff being sold which is dumped from China, right? That is a kind of import, and I told you more the import, more the distortion towards trade, balance of trade. And balance of trade should be positive, it should not be negative. And it should be positive, it will be positive only and only when, it will be positive only and only when you have a positive balance of trade, when you are exporting more, right? So it outlines the strategies. Basically, government again regulates the export-import policy. So it is basically outlining the strategies, incentives and restrictions for promoting trade. So how would you be incentivized? How you will be penalized for a certain activity, for a specific trade, and what practices, what particular transactions are restricted in an economy, right? So the strategies, incentives and restrictions for promoting trade are explained in export-import policy clearly. So it is regulated by Foreign Trade Development Second Regulation Act 1992, because 1991 was the event of industrial policy reforms. Then we talked about globalization, we talked about privatization, we talked about liberalization. Now when we are talking about liberalization and globalization, we need to keep a restriction, we need to keep a check and tap over the activities done by these companies, the global companies. And we need to have a restriction over imports as well, because exports ke case mein to it's okay. If we are in demand about our products or services, that's fine. But if we are going with more of imports, it is a negative thing for us, right? So the Exim policy aims to boost exports, reduce imports, dependency and enhance economic growth. That's what I explained to you, right? It is going to boost exports, it will reduce imports and then dependency on other countries about some raw materials, about some resources. We have studied comparative advantage theory or absolute advantage theory in international business, or you will study in near future, right? Wherein you will study that there are certain climatic reasons or certain regional imbalances in other parts of world, right? And you might be advantageous for certain type of raw materials, some other country might be advantageous for some other type of raw materials. And you can trade off. That is comparative advantage theory or absolute advantage theory. You can trade off and do the exchange.
So here we are talking about the dependency. So sometimes we are dependent, very much dependent on some countries about, like for example, oil. We are very much dependent on some countries like Gulf countries, or sometimes to Russia also. Recently, I'll tell you a case wherein European NATO nations, you would have heard of this situation जहाँ पे war is going on, Ukraine and Russia, right? अब रशिया से ज़्यादातर नेटो नेशंस ऑयल और गैस लेते थे, राइट? एंड आपको पता है कि नेटो नेशंस में बहुत ज़्यादा सर्दी भी हुआ करती थी और हुआ करती है अभी भी, राइट? अब सर्दियों के टाइम पे पिछले साल ये इशू आया कि उन्होंने अपने सप्लाईज बंद कर दिए, अपने गैस कनेक्शंस, अपने ऑयल कनेक्शंस बंद कर दिए. अब वहाँ पे चाहिए था क्या, उनको ऑयल और गैस कनेक्शंस के लिए ऑयल सप्लाई चाहिए था, गैस सप्लाई चाहिए था, सो दैट वो वहाँ पे उस सर्दी में रह पाएँ, क्योंकि उनका खाना पानी, घूमना फिरना, ट्रांसपोर्ट सब कुछ डिपेंडेंट है. अब अचानक से रशिया से लड़ाई के चक्कर में नेटो नेशंस ने सपोर्ट करने के लिए यूक्रेन को ये सब किया, तो इशू ये आया कि खुद ही सफ़र करने लग गए, राइट? क्योंकि अब आपको स्कर्सिटी हो गई रिसोर्सेज की, तो आपकी डिपेंडेंसी थी तभी तो आप स्कर्स हो गए. आपकी डिपेंडेंसी थी तो इसीलिए तो आपने फेस की वो प्रॉब्लम. अदरवाइज अगर मेरे को कोई चीज़ की डिपेंडेंसी नहीं है तो मैं उससे क्यों डरूंगा, मैं तो बुक खुल के बोलूंगा फिर, राइट? सो सिमिलर इज द केस विद द यूक्रेन रशिया वॉर सिचुएशन, जहाँ पे नेटो नेशंस को ये इशू फेस करने पड़े. इवन लंदन फेस सम इशूज इन दैट केस, राइट? It includes measures such as export promotion schemes, duty concessions, and import regulations. It includes measures such as export promotion schemes, duty concessions, and import regulations. Exim में क्या हुआ कि हमने कुछ चीज़ों को लिबरलाइज कर दिया कि भाई बिजनेस करना है तो दूसरा कंट्री भी तो हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट करेगा, हमारे लिए वो इम्पोर्ट हुआ, तो वहाँ पे हमने लिबरलाइज भी किया. और कुछ जगहों पे हमने क्या किया कि इम्पोर्ट पे रेगुलेशंस लगा दिए कि भाई एक लिमिट तक आप डंप कर सकते हो, उसके बाद नहीं. तो एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी, ये सब चीज़ें हमने लगाई, और वहाँ पे हम टैक्सेस, हैवी टैक्सेस इम्पोज करने लगे इम्पोर्टेशन पे, राइट? और हैवी टैक्सेस मतलब ये नहीं कि आप पहले की जैसे कर रहे थे. पहले तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, जिसको हमने लिबरलाइज करके शॉर्टन किया था, राइट? शॉर्ट करने के बाद अभी जो टैक्सेस लग रहे थे वो बहुत हैवी लग रहे थे फिर भी, राइट? सो इट इंक्लूड्स मेजर्स सच एज एक्सपोर्ट प्रमोशन. हम बार बार एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लेके आए. आपने सुना होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हर एक रीजनल एरियाज में अवेलेबल हैं आज की डेट में. उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को सेटअप इसलिए किया जाता है, वो कंपनी स्पेसिफिकली आए वहाँ पे, उन कंपनीज को प्रमोट किया जाता है वहाँ पे जो कंपनीज एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनीज है. सो इस तरह का एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स लेके आए. ड्यूटी कंसेशंस दिए कि भाई आपको जो पहले एक्सपोर्ट पे या इम्पोर्ट पे ड्यूटीज़ लगते थे, जो टैक्सेस लगते थे, उनको थोड़ा लिबरलाइज कर दिया, राइट? एंड आपको कंसेशंस मिल गए उन पे कि आपको टैक्सेस कम देने पड़ेंगे, जिस वजह से आपको अब एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है. एंड देन इम्पोर्ट रेगुलेशंस भी क्लियरली लेके आ गए. देन द पॉलिसी इज पीरियडिकली अपडेटेड टू अलाइन विद अ चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड डायनामिक्स. सो आप देख रहे हैं वॉर सिचुएशन हो जाता है कंट्रीज के साथ. हम पहले पाकिस्तान के साथ ट्रेड करते हैं, अचानक से कोई सिचुएशन होता है जहाँ पे हम लड़ जाते हैं और फिर उसके बाद हम फिर से ट्रेड करना बंद कर देते हैं. अदरवाइज आपके अमेजमेंट के लिए मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के साथ नॉर्मली ओनियन एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है इंडिया से, और उधर से हम खजूर का इंपोर्ट भी करते हैं, डेट्स, राइट? वी इम्पोर्ट इट एंड ऑनियन इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम हियर. सो ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है. बट देन आफ्टर अ वाइल जब कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो इट हैपेंस कि वी नीड टू स्टॉप आवर ट्रेड, एंड वहाँ पे ये सिचुएशन इसीलिए बोल रहे हैं पीरियडिकली इट नीड्स टू बी अपडेटेड टू अलाइन टू द सिचुएशन देन एंड देयर, राइट? मूविंग टू हिस्ट्री ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी. सो फर्स्ट टाइम in 1962 a review committee was established to evaluate and revise the policy. And then 1985 में Mr. VP Singh, the then finance minister, introduced significant reforms to liberalize Exim policy. So basically ये बातें तो बहुत पहले से चल रही थी, हो ये 1991 में पाया. Exim policies के बारे में बात हो रही थी बहुत पहले से, 1962 से सोचो आप, propound हो गई थी चीज़ें. बट देन 1985 तक आए, बातचीत हुई, फाइनेंस मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया सिग्निफिकेंट रिफॉर्म. उसके बाद फिर 1991 में जाके हमने कहीं पे इंट्रोड्यूस करे थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स फर्स्ट टाइम, राइट? सो वो फाइनेंस मिनिस्टर बदल चुके थे तब तक, राइट? सो रिफॉर्म्स इंक्लूडेड सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स, रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट restrictions, and promotion of exports.
अब इसी बारे में बार बार बात हो रही थी, तो फिर से उन्होंने भी वही प्रपोज किया कि भाई अब प्रोसीजर्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कम करते हैं, लोगों को जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड है एक सिंपल सा लाइसेंस दो और उसके बाद उनको एक्सपोर्ट करने दो, इम्पोर्ट करने दो, लेट देम बी the markets be accessible to to the people, let them access the free market areas, right, and then some customs union or customs market also, and let them export things so that it will help the country to grow in economically. Subsequent revisions focused on trade facilitation, export promotion and aligning with global trade norms. अब यहाँ पे क्या क्या हुआ कि हमने ट्रेड फैसिलिटी के लिए पोर्ट्स वगैरह का फैसिलिटेशन दिया कि भाई आपको पोर्ट्स तक लेके कैसे आना, पोर्ट्स में स्टोरेज कहाँ होगा, उन सब फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया। देन एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए हमने बहुत सारी और एक्टिविटीज़ भी करी, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को प्रोवाइड कराना थ्रू जन सुविधा केंद्र और थ्रू सम ऑफ दी लाइसेंस्ड पोर्टल्स हमने स्टार्ट किया, राइट। एंड देन अलाइनिंग विद ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स, हमने उन सारे ट्रेड नॉर्म्स को बहुत सिंप्लीफाई करा दिया लोगों के लिए कि भाई आप ठीक है, आपको नहीं पता उस देश के बारे में, हम बताएंगे आपको, इंफॉर्मेशन सर्कुलेशन बेसिकली, राइट। एंड देन द एक्जिम पॉलिसी हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग इंडियाज ट्रेड strategies and promoting economic growth, right? Then what are the objectives of, again we have gone through the objectives, but again formally we will go through objectives of export import policy. एक ही ऑब्जेक्टिव हो सकता है, इंपोर्ट को तो बढ़ाना नहीं था स्टिल, क्योंकि हम एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं तो वी नीड ट्रेड रिलेशंस विद द कंट्रीज। अब ट्रेड रिलेशंस अच्छे चाहिए तो उनका इंपोर्ट भी लेना पड़ेगा कई बार, और कई बार हमें ज़रूरत भी होती है प्रोडक्ट्स की, जो प्रोडक्ट्स में हम एडवांटेजियस नहीं है, रॉ मटेरियल्स में हम एडवांटेजियस नहीं, हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम क्लाइमेटिकली उतना स्ट्रांग नहीं है वो प्रोड्यूस करने के लिए। अब ऑयल हमारे यहाँ तो नहीं हो सकता प्रोड्यूस, एक दो हार्बर से एक दो रिफाइनरीज है जहाँ जहाँ लगाए हुए हैं, मुंबई में कुछ सी में, राइट, नहीं तो हमारे पास ऑयल के एक्सट्रैक्शन के लिए कुछ है ही नहीं। तो हमें जितना कंजम्पशन है, जिस लेवल का पॉपुलेशन है इंडिया का, उस लेवल के कंजम्पशन के लिए हमें चाहिए उस लेवल का इंपोर्ट, राइट। तो इंपोर्ट भी चाहिए, ज़रूरी है कभी कभी। अचीविंग एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ, एनहांसिंग कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स इन इंटरनेशनल मार्केट। अब चाइना जैसे कर रहा है, चाइना अपने प्रोडक्ट्स की चीपनेस की वजह से, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से अपना कॉस्ट बिल्कुल जीरो कर लेता है और वो उसको आराम से डंप कर पाता है किसी कंट्री में। सिमिलरली इंडिया को भी इन्हांसमेंट करना था अपने क्वालिटी में, अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में, अपने सर्विसेज की क्वालिटी में। एंड आज की डेट में प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी आपको अगर टू लेट यू नो द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ इंडिया लाइक जूट, टोमेटो, मिल्क, अभी होल ऑफ यूएस ऑलमोस्ट इज कंज्यूमिंग आवर टोमेटोज एंड मिल्क, राइट। Similarly, there are other countries which are taking our agricultural produce. So we were advantageous in agricultural produce, and the reason is that we are exporting agricultural products. Otherwise, if we were good in some other sector, might be the case that we could have exported something else. So similarly, now when we have improvised the situation in IT sector, now we are providing the best IT infrastructure available in the world. Right, we are exporting the IT services to whole of the world now. So reducing import dependency and promoting domestic industries. So हम चाहते थे, अभी मेक इन इंडिया आ गया रिसेंटली, बट उस टाइम पे भी ऐसा ही कुछ प्रमोट कर रहे थे वो कि हम डिपेंडेंसी पे ना रहे किसी के और हम अपना एक्सपोर्ट प्रमोट करें, राइट। फैसिलिटेटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वायर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गए थे। वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र का एक नाम सुना होगा आपने, राइट, कि आप दूसरे देशों में उस वायर ट्रांसफ़र के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईजिली, या वहाँ के लोग यहाँ पे रेमिट कर सकते हैं पैसा ईजिली, राइट। तो उससे क्या होगा, ग्लोबल ट्रेड स्टार्ट हो चुका था 1991 के बाद स्पेसिफिकली, कि लोग रेमिट करने लग गए थे एक दूसरे को। अब हमारे जानने वाले लोग वहाँ बिजनेस करने लग गए थे और वहाँ से पैसा यहाँ भेजने लग गए थे। सो उस तरह से चीज़ें चल रही थी, राइट। एंड सिंप्लीफाइंग ट्रेड प्रोसीजर्स एंड रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अच्छा, अभी एक स्पेसिफिक अर्निंग के लिए अगर हम एक पेमेंट गेटवे होता है नॉर्मली, राइट, हम जब भी कोई पेमेंट करते हैं फॉरेन रेमिटेंस के थ्रू तो हमें एक पेमेंट गेटवे पे चार्जेस देने होते हैं। उसको रिड्यूस करना बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव, बहुत बड़ा टास्क था हर गवर्नमेंट का। सो उसको डे बाई डे रिड्यूस करते करते आज की डेट में भी ऑलमोस्ट 10 to 20% हम पेमेंट गेटवे चार्जेस देते हैं अभी भी, कुछ बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए, यूएस के लिए, यूके के लिए, राइट। बट स्टिल we are in a better off situation now as compared to the situation which was prevailing earlier, right? So ensuring compliances with international trade and regulations and norms.
सो मैंने आपको बताया कि जो इन्फॉर्मेशन, जो डॉक्यूमेंटेशन, जो चीज़ें चाहिए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, दैट दोज ऑल दोज एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आर टू बी मेट, एंड उसके लिए इन्फॉर्म कौन करेगा? यहाँ पे ये फैसिलिटेशन प्रोवाइड किया गया थ्रू गवर्नमेंट. प्रमोटिंग सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट थ्रू बैलेंस्ड ट्रेड. अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का बात सुना है, ट्रेड बैलेंस की बात सुनी, तो वहाँ पे हमें ये बताया गया कि भाई आपको करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, इन सब को एक प्रॉपर बैलेंस्ड आउट वे में कंसिडर करना है, राइट. यू कैन नॉट डू वन थिंग कि आपने करंट अकाउंट और करंट अकाउंट को एकदम से एक्सीड कर दिया और कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट को एकदम से ध्यान ही नहीं दिया. तो आप उन सारे ट्रांजैक्शन को बैलेंस आउट करना बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू, राइट. और बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात नहीं, बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करेंगे. सिर्फ करंट अकाउंट का एक जो कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ ट्रेड, उसमें ध्यान रखना है कि आपका जो गुड्स का और सर्विसेज का ट्रांजैक्शन है वो आपके इंपोर्ट से ज़्यादा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा रहना चाहिए, सो दैट बैलेंस रिमेन्स, राइट. नाउ फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड प्रमोटिंग वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स. नाउ हमने आईटी इंडस्ट्री में डेवलपमेंट किया, और उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट देन इट इज कमिंग अप इन माय माइंड. आईटी इंडस्ट्री में हमने स्किलफुल सॉफ्टवेयर, स्किलफुल चीज़ें बनाना स्टार्ट किया, एंड देन वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग देम. दैट इज व्हाट इट इज सेइंग, फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड promoting value added exports. Then encouraging entrepreneurship and job creation in export oriented industries. Highlights of export import policy. So when we talk about merchandise exports from India scheme, so there is a scheme developed here in India, merchandise export from India. So to incentivize and promote exports, we started manufacturing and exporting merchandise from India. Right, and it was obviously outsourced from other nations. Sometimes companies like Nike and Adidas, or some big companies like international companies which were dealing in merchandise, they also started outsourcing or contracting out the work to Indian population. Right, like Bangladesh is considered to be one of the most exporting nation in case of merchandise. Right. So similarly, the merchandise export from India scheme was considered. Then Make in India initiative to boost domestic manufacturing and attract foreign investment. अभी recently Make in India initiative आया, right? किस लिए लाया गया? ताकि foreign currency का reserve भी बने, उसके अलावा foreign competition भी आएगा, better choices आएंगे, आप लोग ज़्यादा better चीज़ें पाएंगे, और obviously price mechanism will be controlled. Competitiveness बनी रहेगी, लोग जो फॉरेन टू क्वालिटी और टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, वही क्वालिटी और टेक्नोलॉजी अब इंडियन कंपनीज को भी देना पड़ेगा. सो टू अपग्रेड द इंडियन कंपनीज एंड एज वेल एज टू प्रोटेक्ट द इंडियन कंपनीज, ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव was brought in. Then special chemicals, organisms, materials, equipments and technologies, that is in short called SCOMET, regulations for controlled export of sensitive items. कुछ countries specifically, कुछ specific medicines for example नहीं import करने दे सकते अपने countries में, right? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया में बहुत नॉर्मल सा कल्चर है, हम गए मेडिकल स्टोर पे नॉर्मली क्रोसिन मांगा, खा लिया, फीवर गया, वैसे अलाउड नहीं है. यू नीड प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन, प्लस देयर आर सर्टेन मेडिसिन्स विच आर नॉट अलाउड इन दोज कंट्रीज इवन इफ आफ्टर द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन. सो उस तरह के सेंसिटिव मटीरियल्स या सेंसिटिव मेडिसिन या सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स आर नॉट अलाउड. सो आपने सुना होगा कई बार कुछ कंट्रीज में, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में, यू कैन नॉट टेक अ पेट विद यू, राइट, योर ओन पेट विद यू. द रीजन इज सिंपल, they fear that particular pet is from outside the environment of their country and it might have certain organisms in that pet which can lead to several बीमारीज, राइट. सो वो चीज़ें होंगी. सिमिलरली अभी जो कोविड स्प्रेड हुआ था, इट वाज एलिगेटेड और इट वाज एन एलिगेशन कि चाइना ने कुछ वायरसेस को स्प्रेड होने दिया. अब इस तरह की जो खबरें होती है वो इसी तरह से आती है कि एक बायोलॉजिकल वॉर ना छिड़ जाए या फिर बायोलॉजिकल वॉर इनिशिएट ना हो जाए. इसके लिए लोग चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें ना हो, स्पेशल केमिकल्स, और कई कंट्रीज़ में अपने कस्टमाइजेशन के हिसाब से बैंड है,
राइट. सो उस तरह से जैसे कि इंडिया में APIs हम बोलते थे कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, बट 60 to 70% ऑफ APIs विच आर नोन एज बेसिकली द इंग्रेडिएंट टू मेक मेडिसिन्स इन इंडिया, वो हम चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं. और अगर वो हम बोलते हैं कि चाइना से मत खरीदो, चाइना अगर बंद कर देना खरीदना तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे. क्यों? क्योंकि हम फिर मेडिसिन भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते APIs की वजह से. सो स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज, सो रेगुलेशन फॉर देम और एक्सपोर्ट कंट्रोल mechanism, right, or for controlled export of sensitive items. Then export of defense products encouraged to enhance defense manufacturing and self-reliance. Export of defense products. So defense products के नाम पे, like US has this surveillance systems in the form of drones and the planes, right? So they use it to keep a check over their boundaries, right? So that foreign nationals or some invaders cannot invade in the country, right? Similarly, we also are trying to become self-sufficient now, and we are trying to send a message to the world that okay, we can also manufacture world-class, quality-wise, best material for defense also, and we are manufacturing it and we are exporting it. Then we have duty exemption scheme for import of raw materials, capital goods and inputs for export production. Okay, अब हम कुछ चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट कैसे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ और ये बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग. कई बार क्या होता है कि आपने सुना होगा एक कंपनी का नाम, हुंडई का नाम सुना होगा, बहुत फेमस कंपनी है कार की. हुंडई की मोस्ट ऑफ दी जो कंपोनेंट्स हैं वो जापान से आते हैं, राइट. एंड जापान से जाके फिर एक स्पेसिफिक कंट्री में जाके उसको साउथ कोरिया में जाके उसको आराम से असेंबल किया जाता है और फिर मैन्युफैक्चर्ड कार्स वहाँ से भी एक्सपोर्ट की जा रही थी टू US और टू सम अदर नेशंस, राइट. सो आपको ये समझना है कि एक्सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स भी चाहिए होते हैं. वो कंपोनेंट्स आपको लाने पड़ते हैं कहाँ से? दूसरे कंट्री से. उसके लिए आपको ड्यूटी एग्जम्पशन देना पड़ता है उनको कि आप उस पर टैक्स नहीं लगा सकते. तो उन कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करने के लिए, ताकि आपकी कॉस्ट ना बढ़े, इसके लिए आप इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाते हैं. सिमिलरली हम भी कुछ ऐसा कुछ एक्सपोर्ट करते हैं जो हम उन कंपोनेंट्स को यूज़ करके बनाते हैं जो कंपोनेंट्स हम बाहर से लेके आते हैं दूसरे कंट्री से, एंड कंपोनेंट्स अल्टीमेटली यूज़ करके हम प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करते हैं, राइट. सो टू रिड्यूस कॉस्ट इंपोर्ट ड्यूटी हटाते हैं. मैकेनिज्म टू एड्रेस क्वालिटी कंप्लेंट्स एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स इंश्योरिंग फेयर एंड ट्रांसपोर्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस, राइट. सो आई नॉट एक्सप्लेन दिस बिकॉज दिस इज अगेन ट्रेड डिस्प्यूट्स के बारे में है. इंश्योरिंग फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस को लेके ये बातें हम कर चुके हैं 2 बार 3 बार पिछले वीडियोस में भी और अभी भी. एडिशनल पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स, अभी मैंने बताया था फैसिलिटेशन दिया है. पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स बनाए गए डेजिग्नेटेड टू फैसिलिटेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस. सो इनको हम TEE बोलते हैं कई बार, और एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एग्जाम्पल आपको मैं दे चुका हूँ जहाँ पे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा था, right. And duty free trade promotion DFTP scheme to facilitate import and export of goods, right. So all these activities were done through Exim policy, export import policy. Okay, that is a short break here. We'll meet you after a break. Now quality learning is easily available at your doorstep. S. Chand Academy brings detailed lectures based on UGC curriculum as per the new Education Policy 2020. So do not forget to subscribe to the S. Chand Academy and access the wide world of knowledge conveniently sitting within the comfort of your home. Stay connected and keep watching S. Chand Academy. Happy learning! Welcome back to S. Chand Academy. Before the break, we have gone through a specific topic called Exim policy, export-import policy, the objectives of export-import policy, and now we will look into a new topic. So, the new topic is foreign investment. We have talked about export-import as well. Now, it is very much related to export-import because when we were trying to promote exports or we were trying to promote imports for certain items, we were talking about the foreign currency exchange and something like that, right? So we are trying to promote foreign investments also nowadays. Now what is foreign investments? Foreign investment refers to the investment made by individuals, companies
or entities from outside the country into the domestic company. Now, there are two sorts of foreign investments. We are going to study about that also. Now, why do a country need foreign direct investment or foreign portfolio investment? Why do we need foreign investment? See, foreign investment is a matter of again, currency exchange, then currency reserves, and similar things. We need some sort of reserves in our country, right? We need those reserves to negotiate with those nations to whom we are going to trade off again later on, right? So all those activities relevant to foreign investment are explained here in this particular video. Now it involves capital inflows for various purposes, such as setting up of business, acquiring assets, और participating in joint venture. Mergers and demergers के बारे में सुना होगा आप सबने, और बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो ऑन अ डेली बेसिस होते हैं, जिसकी वजह से कई बार देखते होंगे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, कई बार डिसइन्वेस्टमेंट्स हो जाते हैं. वी कंपनीज लाइक वोडाफोन एंड आइडिया, राइट, they are together now, VI, in the name of VI, merger happened and a lot of investment happened, right? Moving to regulations of foreign investments in India. Now, there are various laws which govern the foreign investments, right? There is Foreign Exchange Management Act, which is involved here, FEMA, right? FERA also is there, Foreign Exchange Regulation Act. So there are few more acts which are applicable here in such sort of transactions. So when we talk about regulations, the Foreign Exchange Management Act regulates foreign exchange transactions and investments. So कितना लिमिट में लाना है, कितना लिमिट को एक्सचेंज करना है, ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होनी चाहिए, right? And even it also explains about an individual carrying a specific amount of foreign currency with them, right? So that is also explained. Then the Reserve Bank of India and the Foreign Investment Promotion Board, FIPB, oversee foreign investment approvals. So when a country or a specific organization of another country wants to invest in India, there is a mechanism which needs to be followed up. Right now, this mechanism will be followed or will be facilitated by several institutions. One of the institutions is RBI, right? And then this is Foreign Investment Promotion Board, which helps in entering India, let's say, right? So talking about Reserve Bank of India or Foreign Investment Promotion Board, this oversees the India entry strategy. This oversees the onboarding of those companies in India specifically. So the Department for Promotion of Industry and Internal Trade are responsible for all the policies related to foreign direct investments. So what are the restrictions to be there? What are the exact limits to be there, right? That is all seen through this particular department, right? Now, FDI is subject to sector-specific caps. I told you already that there are certain restrictions, there are certain caps over what sort of investments can be done, how much investments can be done. The percentage of FDI in different sectors is different, and you need to look into all those sectors, what exact percentage is allowed for FDI, foreign direct investment is allowed for that particular sector, right? And उस sector में भी कुछ specifications हो सकते हैं कि subsections भी हो सकते हैं कि कितना allowed है किस सिचुएशन में. सो फॉर एग्जाम्पल रिटेल के केस में आपको सिंगल रिटेल ब्रांड के केस में इट इज़ 100% एंड मल्टीपल ब्रांड रिटेल के केस में इट इज़ 51% अलाउड. डिफेंस के केस में कुछ और होगा, ऐसे ही अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग सेक्टर्स के केस में इट इज़ डिफरेंट. यू नीड टू लुक इनटू ऑल दोस परसेंटेजेस. नाउ ऑटोमेटिक राउट एंड गवर्नमेंट राउट क्लियरली गिवन है. सो ऑटोमेटिक राउट में परमिशंस उतना नहीं चाहिए जो कि गवर्नमेंट राउट में आपको परमिशन चाहिए. गवर्नमेंट राउट में आपको बहुत सारे परमिशन चाहिए होंगे टू इन्वेस्ट इन इंडिया, राइट? सो ऑटोमेटिक राउट इज मोस्ट फेवरेबल वन. देन रेगुलेशंस एम टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट्स, protect national interest and ensure compliance with applicable laws. Now when we talk about regulations, basically when we are talking about India, we always want to protect the sovereignty of this country, right? And when we allow FDI or foreign direct investments in any form, it will always pose some sort of danger to our country's sovereignty. And in that case, there are certain restrictions, certain regulations needed always, right? Moving to need for foreign investments. देखो कई पॉइंट्स तो हम खुद ही देख चुके हैं पिछले वीडियोस में कि हमें फॉरेन
एक्सचेंज करेंसी चाहिए, या फिर हमें रिजर्व चाहिए, या फिर हमें नेगोशिएटिंग पावर चाहिए उन कंट्री से, हमें बेटर रिलेशंस डेवलप करने हैं, देन अगेन लेट्स से थ्रू दी पॉइंट्स फॉर्मली फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. सो कई बार हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो होते हैं उनको फाइनेंस कराना है. देन प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन लेके भी आना है. कई बार कुछ अच्छे टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस हैं जो पॉजिटिव्स हैं दूसरे कंट्रीज़ के, वी वांट टू कीप देम हमारे कंट्री में. सो उसके लिए हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए हमको. देन फिलिंग गैप्स इन डोमेस्टिक सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमको वो गैप भी फिल करना है जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे पास या डोमेस्टिक सेविंग्स के वेज हैं. हमको मर्जर डी मर्जर के थ्रू हेल्प मिल जाए, अगर दूसरे कंपनीज के साथ काम करने का मौका मिल रहा है तो क्या बुराई है उसमें? कोई बुराई नहीं है, राइट. सो इसलिए हमें सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के अलावा भी सोचना है कि भाई हमारा जो गैप है, एक डोमेस्टिक गैप है, वो फुलफिल करना है. देन enhancing technological and advancements and knowledge transfer. अब technical know-how, technical knowledge or technological advancements or some sort of knowledge which is transferred from other nations. अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यूज़ कर रहा हूँ क्रिप्टो के बारे में. क्रिप्टो करेंसीज के बारे में मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस विच वर हैपनिंग, बहुत बाद में पता चला है लोगों को कि 80 to 85% of transactions were happening through China, right? And this is a concept originated from US. Algorithms US वाले बनाए, but transactions mostly कौन कर रहा है? China, right? And फिर इंडिया में भी इसके बारे में फॉलो अप होने लग गया. इंडिया में भी लोग बहुत एक्साइटेड थे क्रिप्टो को लेके. सो वो एग्जाम्पल मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आपको अगर टेक्निकल नो हाउ या फिर कोई नॉलेज ट्रांसफ़र हो रहा है किसी कंट्री से, वो इस वजह से होगा क्योंकि उस कंट्री के लोग आपके यहाँ बिजनेस करने आते हैं, कुछ और काम से आ रहे हैं, इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, तो आपको वो नॉलेज भी ट्रांसफ़र हो सकता है उसके साथ. तो नॉलेज ट्रांसफ़र के लिए वी विल कंसिडर इन्वेस्टमेंट. देन स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस पॉइंट सेवरल टाइम्स, विल स्किप दिस. सपोर्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज. Yes, see, sometimes the research which we are conducting in India is not at par with other nations, right? So in any sector you conduct research, it is obviously the technical know-how is not there, the research tools usage is not there in India. So the PhDs or the research which is being conducted in India is not at par with the other nations' research activities, right? So we need to know that also, right? Encouraging innovation and entrepreneurship. So when new technology, new products, new services will come to India, we will also try to evolve and we'll try to learn and we'll try to produce such activities. We'll try to produce such goods or services in India as well. Strengthening export-oriented industries and foreign trade. So when we talk about export-oriented activities or industries, we will strengthen those industries as well, and we will strengthen those foreign trade activities as well when we talk about strengthening export-oriented activities, right? Then improving productivity and efficiency in various sectors of economy. So this is the wholesome point, that we want to increase the efficiency of all the sectors available in the economy. So talking about the one of the most important topic, that is collaborations. Nowadays we see a lot of activities done by our Prime Minister, sir, right? A lot of collaborations happening. Like recently France में अभी एक एक्टिविटी के बारे में सुना होगा आपने कि फ्रांस में अब आप आईफिल टावर के लिए पेमेंट इंडियन रुपीज़ में कर सकते हो, राइट? वो भी एक कोलैबोरेशन है. उसके अलावा आप इंडियन करेंसी में पे कर सकते हो टू रशिया फॉर ऑयल इंपोर्ट्स, और समटाइम्स इन रूबल ऑल्सो इन देयर फॉरेन एक्सचेंज, नो नीड ऑफ डॉलर इन दैट केस, राइट? सो कोलैबोरेशंस विल हैपन, एंड कोलैबोरेशंस एफडीआई और एफपीआई को प्रमोट करने के लिए होते हैं, right? And to basically develop the country's economic well-being, FDI और FPI उस लिए करते हैं, right? And collaborations का main मुद्दा यही है कि collaborations happens because country wants to make good relations with other countries, country wants to have a better economy, and better economy will only be built only and only when you develop through certain factors, and those factors specifically are listed in the previous videos, in today's video,
right? So just have a look and have a look over all the videos happened before. Just go through all the videos and try to accumulate what all economic growth factors we have talked about, right? So, okay, that is it about this video. We have covered Exim policy. We have covered the need for Exim policy. We have covered the objectives in this video of Exim policy, right? And we have gone through the foreign investments. We have gone through the types of foreign investments, foreign direct investments, foreign portfolio investments. Why do we need foreign investments, right? And we have gone through the highlights of all those topics. So we'll see you in some other video with some new topic. To get in-depth knowledge of various subjects in commerce, we recommend these books from Exim Publishing and Vikas Publication. Link is provided in the description box. If you found our video interesting, please like, share and subscribe. And do not forget to press the bell icon. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.